Good morning, my dear students. Welcome to Stanford School online classes. In this science session of class 4, we will be doing the exercise from our book, that is chapter 2. हमने chapter 2 ऑलरेडी पढ़ लिया है. आपने उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे थे, फिलअप्स भी करे थे. लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिया था, है ना? So in this video, we will be doing the exercise from our book, science book. Okay. In this slide, you can see part A and part B, which is to be done in your book only. आपको ये part A और part B अपनी बुक में ही करना है, ठीक है? So part A is multiple choice questions. आपके part A में multiple choice questions दिया हुआ है, and in this you have to take the correct option. ठीक है, आपको 4 options दिए हुए हैं जिसमें से आपको एक correct option पे टिक करना है, right? So the first one is, which is the hardest substance in the human body? हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सी होती है? आपको वो करेक्ट ऑप्शन चूज करके उसको टिक करना है, राइट? द फर्स्ट ऑप्शन इज इनामल, द सेकेंड इज स्किन, थर्ड इज बोन एंड द फोर्थ इज स्कल. आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस गिवन यू हैव टू चूज द करेक्ट वन, राइट? द नेक्स्ट इज, which type of teeth helps us in biting and cutting food? हमने 4 टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े थे, 4 काइंड्स ऑफ टीथ पढ़े थे. उनमें से आपको बताना है कौन से वाला टीथ हेल्प करता है इन बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, राइट? द फर्स्ट ऑप्शन इज कैनाइन्स, द सेकेंड इज इंसाइजर्स, थर्ड इज प्रीमोलर्स एंड द फोर्थ इज मोलर्स, राइट? थर्ड इज, टीथ हेल्प इन 3 ऑफ द फॉलोइंग, पिक द ऑड वन आउट. अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है उसको टिक करना है जो इनमें से ऑड वन है. इनमें से आपको 3 करेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं जो टीथ करता है, जो फंक्शन टीथ का है. आपको इसमें से ऑड वन आउट बताना है. फर्स्ट ऑप्शन इज स्वैलोइंग, सेकेंड इज च्यूइंग, ग्राइंडिंग एंड देन हेल्प इन स्पीकिंग. सो आउट ऑफ दीज 4 you have to choose the odd one out, right? In part B, in the sequence given below, fill in the blanks to get the right word based on what you have learnt. We have already studied the chapter. उसके बेसिस पे आपको जो फिलअप दिया हुआ है, फिलअप दिए हुए हैं, आपको उसको फिल करना है, ठीक है? See, the first is slice of bread. There is a slice of bread, ठीक है? जब ये हमारे माउथ में जाता है, हम माउथ में इसको क्या करते हैं? The first letter is given is as C. आपको आगे 3 ब्लैंक दिए हुए हैं, आपको उसको फिल करना है, ठीक है? उसको करने के बाद इट ब्रेक्स अप इनटू पीसेस एंड देन व्हाट हैपेंस, इट मिक्सेस विद डैश विद द वर्ड विल स्टार्ट्स विद एस एंड इट्स द वर्ड दैट इज स्टार्ट्स विद एस इज, इट इज यूज्ड टू वेट एंड सॉफ्टन द फूड, ठीक है? एंड देन व्हाट हैपेंस, द स्मॉल वेट पीसेस ऑफ ब्रेड इज swallowed, राइट? So these 2 fill-ups you have to fill. So these 2 fill-ups you have to fill with the correct word, right? So this exercise is to be done in your book only. In the next slide you can see part C and part D. Part C है आपका tick the correct answer and the part D is short answer questions. These 2 parts are supposed to be done in your notebook. आपको ये साइंस नोटबुक में करना है और पार्ट सी आपको बुक में भी करना है, ठीक है? सो पार्ट सी है आपका टिक द करेक्ट आंसर. द फर्स्ट इज कैनाइन्स और इंसाइजर्स आर टीयरिंग टीथ. आपको इन दोनों में से एक करेक्ट टिक करना है. सेकेंड इज एनामल और डेंटाइन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी. द थर्ड इज, एन अडल्ट ह्यूमन हैज 30 or 32 permanent teeth. The fourth is, there are 2 or 4 canines in each jaw. Fifth is, germs are killed or made by boiling. Sixth is, molars help us to bite or chew the food. Right. So this is your tick the correct answer, which is to be done in book and notebook both. ठीक है. Part B is short answer questions. अब आपको ये पार्ट डी जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये आपको नोटबुक में करना है इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the difference between milk teeth and permanent teeth? We have already studied about the 2 sets of teeth, है ना? तो वही है, हमने जो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ा था. आपको उन दोनों में डिफरेंस बताना है, राइट?
The second is name the teeth that help us chew and grind the food. हमें teeth बताना है, उस teeth का name लिखना है जो हमारे food को grind करने में और chew करने में help करता है. Right? So this is the book exercise which is to be done by everyone and submitted to me. So part A and part B, it is to be done in the book, in your science book, and it is given on page number 18. And part C and part D is to be done in your notebook, right? In this, part C is to be done in your book also and in the notebook also, but part D you have to do in the notebook, right? And it should be done very neatly and in a good handwriting, right? So that is all for the chapter and this video. Thank you children. Take care.